Good morning, everyone. My name is Snehasis. I am a lecturer in automobile department in Government Polytechnic Bolangir. Today the topic is slotting machine. So there is a PPT behind me. Let's study from the PPT. The slotting machine, slotting machine. Slotting machine used to create key groups and slots. It's a internal machining process. Slotting machine. The slotter or a slotting machine is a reciprocating type of machine tool similar to a shaper or a planer. Just like shaper machine, there is a reciprocating head is there, which is used to create a flat surface. But in shaper machine, a reciprocating head is mounted on the top of the column, so that this reciprocating movement, here a work holding device is mounted which holds the workpiece. This portion is our RAM, and from this portion we mount a single point cutting tool, that is called slotting tool. This portion of the RAM is reciprocate, just like up and down motion. Clear? Here a work holding device is mounted. This is a picture of slotting machine. It is used to cut groups and keyways and slots of various shapes, making regular and irregular surface both internal and external. सेपर मशीन यूज करिके आमे इंटरनली जो वर्कपीस रो इंटरनल साइड आउ एक्सटर्नल साइड रे भी आमे स्लॉट करि परिबा, की ग्रुप्स करि परिबा. इट मे बी कंसीडर्ड एज वर्टिकल शेपर. व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल शेपर? शेपर मशीन रे देखो, शेपर मशीन एटा कोन अछि, रैम रो मूवमेंट एटी हॉरिजॉन्टल अछि ना नहीं, किंतु सेही जगह देखो स्लॉटर मशीन रे सेही रैम रो मूवमेंट एई जगह रे हमर वर्टिकल रे कन्वर्ट होछि. बुझि पारछो? वर्किंग प्रिंसिपल्स दिटा का समान. So it is called vertical shaper machine. The machine operates in a manner similar to the shaper. However, the tool moves vertically rather than in a horizontal direction. I saw in the previous slide. The job is held stationary. Here
Here both in slaughter and shaper machine the workpiece holds stationary by a work holding device. The slaughter has a vertical ram and a hand powered operated rotary table. There is a rotating table, is this one. This one, it is a rotating table which is operated by hand. This mechanism. Clear? Let's discuss about difference between slaughter and shaper machine. All the working principles are same between slaughter and shaper machine. Only one difference is there. The ram holds the tool and reciprocate in a vertical axis. Here the ram movement is vertical. Here the ram movement is vertical. But here the ram movement is horizontal. Only is the difference. Here the parts of slotting machine. There is a detailed parts. There is 16 number of parts. We only discuss about major things. What are the major things? There is base, cross slide, table, ram, tool. These are the all major things. Where is base? Base is this one. Base is this one. What is the function of base? Now it holds all the machine tools, just like all the other machines. What is cross slide? Cross slide is this one. It moves across the machine where the table or rotating table is mounted. Tool. This is the tool. We call it the tool post, where a single point cutting tool is used to cut, slot or groove. And as we discussed, this is our ram. Base or bed. Here we can see bed is there. The base is rigidly built to take up all the cutting forces and entire load of the machine. Base कौन करूची ना तमर मशीन नॉर्मली मशीनिंग कला बेले वाइब्रेशन आसे आ जेतक भी वर्क पीस जेतक सब पार्ट्स अछि मशीन रो ऊपर को अछि तो कोनोसी भी जिंस बेस रो ऊपर अछि माने सीता लोड नै थिबो तो सेति पय ताको हम रिजिडली बिल्ड करा होची. The top of the bed is accurately finished to provide guideways on which the saddle is mounted. देखो ए पार्टटा ए जो जिंसटा तमरा कोन परे देखा जाउची गोटे गाइड वे परे देखा जाउची ना नहीं
से गाइड वे रे ए पार्टटा हमर सैडल कहूचे ए टोटल पार्ट हमें सैडल कहूचे हला ए टोटल पार्ट हमें सैडल कहूचे से सैडल तार हमर बेड रो गाइड वे रे मूव करूची बुझी पारछो तो गाइड वेज आर परपेंडिकुलर टू द कॉलम फेस कॉलम रो फेस टा होची कोन देखो एमिति अछि आओ गाइड वेज तो देखो ताको कोन कते करछि परपेंडिकुलर 90 डिग्री करिछि हां ना नहीं बुझी पारछो देन आसला column is the vertical member in which cast integral with the base column को करूची गोटे vertical member ता भीतर जतक ड्राइव मेकानिज्म अछि सब ता भीतर अछि कोन पुली टू आरंभ करी फीड मेकानिज्म ऑल आर इनसाइड द column से इंटीग्रल है कि बेस सहित अछि तो बेस देखो इठी एटा तमर बेस थिला ना ए टोटल 5 बेस थिला या सत ये पूरा कोन अछि ठीक से ही अछि ना नहीं ठीक से ही अछि ना नहीं एंड drive as we discussed driving mechanism and feed mechanism are inside the column the front vertical face of the column is accurately finished for providing guideways on which ram reciprocate these are the guideways on which the ram this is the ram reciprocates next is saddle is this one saddle is mounted on the top of guideways of bed this saddle movement is towards and away from the column to give a workpiece a longitudinal fit. The top face of the saddle is accurately finished to provide guideways for the cross slide. Here on the top of the saddle there is another guideways for movement of cross slide. These guideways are perpendicular to the guideways of the base. Here is the base. Here is the base. Movement, guideways movement. Cross slide movement is this slide. So there is a 90 degree. Yes or no? Cross slide. Saddle gives longitudinal movement. Longitudinal means along the workpiece. But cross slide gives across the workpiece or the machine. So there is a 90 degree. Cross slide is mounted upon the guideways of the saddle and moved parallel to the face of the column. Here the column face is this part and cross slide moves just like this. So there is a parallel movement. The movement of the slide may controlled either by hand or power supply from the cross feed. Rotary table. What is rotary table? It is a table on which a work holding device is mounted. Why it is called rotary table? Because in this machine we cannot rotate our workpiece. We cannot rotate our cutting tool
because it is fixed with ram. So we have to rotate the table to create a multiple indexing of slots. The rotary table is a circular table which is mounted on the top of the cross slide. Here, this is the rotary table. This is the rotary table. The table may be rotated by a worm and worm gear connected to the underside of the table. Here, a worm and worm wheel arrangement is used to rotate the table. Rotation of the table may be affected either by hand or power. We can rotate the rotating table by our hand or a machine power. In some machine, the table is graduated in degree that enables the table to rotate for indexing or dividing the periphery of a job in the equal number of parts. This means if this rotary table can enable to create an indexing for dividing the equal number of parts of workpiece periphery. T slots are caught on the top face. Here, top face, on the top face, T slots holding the work by different clamping device. The rotary table enables a circular or counter surface to generated on the workpiece. RAM and tool head assembly. Here is our RAM and tool head assembly. The RAM is a reciprocating member of the machine mounted on the guideways of the column. Column ra guideway re ye reciprocate karuchi upward and downward. यार बॉटम पार्ट रे टूल पोस्ट बा टूल हेड असेंबली अच्छी. A slot is caught on the body of the ram for changing the position of the stroke. एटा कौन कहला ना हमर नॉर्मली जेमति सेपर मशीन न थाए फॉरवर्ड रे कटिंग हुए जेतेबेले से रिवर्स आसे तेरे कटिंग हुए नहीं तो हमें से रिवर्स रो स्पीड टाको हमें रिड्यूस करले का दर रिड्यूस करछि क्विक रिटर्न मेकानिज्म जा द्वारा कि हमर मशीनिंग टाइम रिड्यूस हो जाए टोटल मशीनिंग टाइम रिड्यूस हो जाए. तो एथिरे भी सेम जिंस अछि एथिरे फॉरवर्ड रे ही कटिंग हुए रिटर्न रे कटिंग हुए नाही. तो सेति पई से स्लॉट देछि रैम रो कौन पाई ए पार्ट रे टू चेंज इट्स स्ट्रोक लेंथ. देखो लिखा है स्लॉटर रिमूव्स मेटल वर्कपीस ड्यूरिंग डाउनवर्ड कटिंग स्ट्रोक. डाउनवर्ड रे ही कटिंग हबो आउ अपवर्ड जेतेबेला आसुची रिटर्न स्ट्रोक सेटा कुआ जाउची सेतरे कटिंग हेबो नाही. तो सेही जिंसटा को हमें जो हमर फॉरवर्ड आउ रिटर्न रो जो हमें मशीनिंग टाइम रिड्यूस करबा एतरे तीन प्रकार मेकानिज्म यूज होची. गोटे होची व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मेकानिज्म, वेरिएबल स्पीड और रिवर्सिबल मोटर ड्राइव मेकानिज्म एंड हाइड्रोलिक मेकानिज्म.
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए स्लॉटर मशीन देखो एटा गोटे स्लॉटर मशीन एते वर्कपीस होल्ड हेची एथे कटिंग टूल भी अछि एटी जे कटिंग पॉइंट टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एटा तमरा तळे टेबल अछि रोटेटिंग टेबल जादरे टी स्लॉट अछि एथरे अडे वर्क होल्डिंग डिवाइस लागि छि एटा जे ताको वर्कपीस को होल्ड कर रखी छि The vertical slide holding the cutting tool is reciprocated by a crank connecting rod mechanism. तो कौन कहला ना जो कटिंग टूल टा अछि से रेसिप्रोकेट करूची कहा द्वारा क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मेकानिज्म द्वारा जो थे तार रेसिप्रोकेशन मोशन क्रिएट होची द जॉब इज मेसिन व्हिच इज माउंटेड डायरेक्टली ऑन द वाइस ऑफ द वर्किंग टेबल तो ये जो वर्कपीस टा तमरो मशीनिंग हला ए पार्ट पर्टिकुलरली ए पार्ट तमरो मशीनिंग हला ना नहीं बुझी पाछो तो ए पार्ट तमरो मशीनिंग हला in slotting machine in addition to the longitudinal and cross feed a rotary feed is motion is also provided in the working table कौन लिखला ना स्लॉटिंग मशीन रे लॉन्गिट्यूडनल कोथरे हबो ना सैडल द्वारा हबो क्रॉस फीड कोथरे हबो ना जेम देछि क्रॉस फीड अछि आ रोटरी फीड कोथरे हबो ना टेबल रे दिया हबो जो टेबल थला तमरो ए टेबल रे कहा द्वारा हमरो वर्म एंड वर्म व्हील द्वारा हमें ताको रोटरी मोशन क्रिएट करबा बुझि पाछो मो कथा तो स्लॉटर मशीन दी प्रकार अछि गोटे होची पंचर स्लॉटर आ गोटे प्रिसिजन स्लॉटर ए दी जन भीतर बेसिक डिफरेंस हला पंचर स्लॉटर होची हेवी मशीनरी पे यूज होची प्रिसिजन स्लॉटर लाइट मशीनरी पे यूज होची बुझि पाछो तो हेवी मशीनरी माने स्लोयर रन करिवो लाइट मशीनरी माने हायर स्पीड रन करिवो आ नॉर्मली लाइट मशीनिंग करिवो माने तादरे प्रिसिजन बा एक्यूरेसी अधिक आसीबो तो ना जोड़ा सजेस्ट करूची प्रिसिजन स्लॉट माने सेतरे वर्किंग जो तमरो आउटपुट आसीबो पूरा एक्यूरेट आसीबो तो पंचर स्लॉटर मशीन इज ए हेवी रिजिड मशीन designed for removal of a large amount of metal from a large forging or casting सेठी को आला the precision slaughter machine is a lighter machine and is operated at high speed कहली तुमको लाइट अच्छी माने हाई स्पीड रन करिवो the length of the stroke of a puncture slaughter is sufficiently large it may be as long as 1800 to 2000 mm means 1.8 मीटर रो 2 मीटर पर्यंत तार स्ट्रोक लेंथ हे परिबो कार रैम रो मीटर द एथरे कोन होला प्रिसिजन स्लॉटर सेति की लाइट वेट टा छोटो साइज रो मशीन हेते होबो नाही तो द मशीन इज डिजाइन्ड टू टेक लाइटर कट्स गिविंग द एक्यूरेट फिनिश The puncher slaughter ram is usually driven by a spiral pinion machine with a rack teeth caught on the underside of the ram. Precision slaughter रे कौन होइला ना using special jigs the machine can handle a number of works on a production basis माने special jig किंबा fixture हमें यूज करी की नॉर्मली हमरो प्रोडक्शन वर्क करि परिबा प्रिसिजन टूल रे प्रिसिजन ये द पिनियन इज ड्रिवन बाय ए वेरिएबल स्पीड रिवर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर सिमिलर टू द प्लानर मशीन कोन हमें सेपर प्लानर भीतर बेसिक डिफरेंस हला कोन सेपर लाइटर यूज होची आ प्लानर होची हेवी मशीनरी सेम होची एथरे पंचर द प्रिसिजन स्लॉटर मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर जनरल पर्पस वर्क and are usually fitted with the Whitworth quick return mechanism एथरे इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा हमें ड्रिवन करूचे सेथरे Whitworth quick return mechanism यूज करछे the feed is also controlled by the electrical gear कोथरे हमर पंचर स्लॉटर मशीन रे application of a slotting machine
ना इंटरनल फ्लैट सरफेस क्रिएट करि परिबा enlargement and finishing of non circular holes bounded by a number of flat surface blind geometrical hole like hexagonal socket use kari pariba internal grooves and slots of rectangular and curved section eta bi banai pariba normally majorly amar kon use करूचे ना keyway and splines जिनस गोटा हमें normally स्लॉटर मशीन रे डिजाइन करूचे मेजर तो जो बेसिक डिफरेंस दिया हला सेपर प्लानर और स्लॉटर मशीन विषय रे देखो तीनटा जिक जिंस समान सेपर मशीन होची लाइटर मशीन प्लानर होची हेवियर मशीन सेपर मशीन और प्लानर मशीन में बेसिक डिफरेंस है कौन सेपर रैम मूव करता है प्लानर टेबल मूव करता है और स्लॉटर और सेपर और प्लानर भितर स्लॉटर डिफरेंस है कौन ना स्लॉटर जो जगह सेपर तमर हॉरिजॉन्टल रैम मूवमेंट कला बड़े स्लॉटर वर्टिकल रैम मूवमेंट होची तो एतिकी ही तार मेजर जिंस रहिला या विषय किछि पॉइंट भी लिखा हिची